Good morning, students. I hope you all are fine and fit at your home. In the last lecture, we have learned about the isosceles triangle, equilateral triangles, then property of the side, which say us that the sum of two sides of any triangles is always greater than its third side. And we have learned about the exterior angles and property of the sum of three interior angle of triangle. इतनी पढ़ाई हमने लास्ट 2 लेक्चर्स में पढ़ी थी. Now we are introduced the Pythagoras property. What is the Pythagoras and what he says? Pythagoras is the one kind of the mathematician of the Egypt country, and he finds some property about the right angle triangles. So first we know that what is the right angle triangle and what is the part of the right angle triangle. Now if we draw that right angle triangle, okay, where one angle is the 90 degree. In the triangle, if one angle is the 90 degree angle, it's called right angle triangle. And the side which are made a right angle triangle, it's called legs. What? Leg. मतलब जो दो साइड राइट एंगल जनरेट करती है, जो दो साइड राइट एंगल बना रही है, द टू साइड विच आर फॉर्म अ राइट एंगल, इट्स कॉल्ड द लेग ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल. मतलब इसको हम राइट एंगल ट्राइंगल के लेग बोलेंगे. ठीक है. और राइट एंगल ट्राइंगल में राइट एंगल बनाने, जो राइट एंगल बन रहा है उसकी जो ऑपोजिट साइड होती है, द ऑपोजिट साइड ऑफ राइट एंगल, अगर इट्स कॉल्ड हाइपोटेनियस. इट्स कॉल्ड हाइपोटेनियस. It's called a hypotenuse. So in this triangle ABC, measurement of B is 90 degree. Okay, measurement of B is 90 degree, and this measurement of B which are made by two sides are legs, like a legs of triangle ABC. Legs of triangle ABC is AB and BC. AB and BC, and hypotenuse of triangle ABC is AC. Okay, hypotenuse of triangle ABC is AC. So now according to the property of Pythagoras, what he said? Oh, he said the square of hypotenuse, the square of hypotenuse, it means I can write here AC is the hypotenuse, so AC square is equal to sum of the square on the legs. उसके लेग के स्क्वायर का एडिशन हमें करना है. तो AB स्क्वायर plus BC square. This is the Pythagoras property, or it's called a Pythagoras theorem. The square of hypotenuse is equal to the sum of square of its legs. So first you know that what is the square. Okay, like a 2 centimeter side, it is a 2 centimeter side. If we want to the square of 2, then we can draw a square having a 2 centimeter, 2 centimeter, 2 centimeter, 2 centimeter. And if we take the area of this square, it's called square of 2, because of the area of the square having a 2 centimeter side is equal to 4. Okay, मतलब आप किसी भी नंबर का स्क्वायर लेना है तो उसी नंबर के साइज के जो साइड होती है उतनी साइड का अगर हम स्क्वायर बनाए तो स्क्वायर का जो एरिया मिलता है उसके स्क्वायर जितना ही हमें मिलता है. इसीलिए तो हम बोलते हैं इसको स्क्वायर सेंटीमीटर. क्या बोलते हैं? स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर मीटर, इस तरह ही हमें मिलता है. अगर हम 3 सेंटीमीटर हो तो 3 सेंटीमीटर की लाइन का एक स्क्वायर बनाओ तो उसका जो एरिया मिलेगा 3/3 इज इक्वल टू 9.
तो 9 इज द स्क्वायर ऑफ 3, 9 इज द स्क्वायर ऑफ 3। तो वो जो एरिया मुझे मिलेगा वो 3 के स्क्वायर जितना ही मुझे मिलेगा। सो ये बात आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे पास एक ऐसा छोटा सा प्रैक्टिकल है, ठीक है, जिसकी वजह से आप जान पाओगे कि एक्चुअली में इसका हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर और बाकी के 2 लेग्स के स्क्वायर के एडिशन जैसे कैसे होता है, ठीक है। चलो लेट्स सी हियर, you can see here you can observe here, this is the right angled triangle where 90 degree form here. So this side will be the hypotenuse and these 2 sides are legs. If we extend every side as a square, if we extend every side as a square, we can extend this side into the square, this side into the square and this side into the square. So we can get 3 square. Okay, this one is the square of hypotenuse, this one is the square of base, this one square of the also a base. So according to the Pythagoras, if the area of these 2 square is equal to this area, then we can say that the square of hypotenuse is sum of 2 legs, square of 2 legs. So देखो ये completely empty हो गया है, यहाँ पे दोनों पे एरिया कवर हो गया है। अगर इन दोनों को कम्प्लीटली एम्प्टी हो जाए, ये पूरा भर जाए, तो इसका मतलब क्या होगा कि इन दोनों का स्क्वायर का एडिशन करोगे तो हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर जितना हमें मिलेगा। सो लेट्स सी इट। अगर हम इस तरह से इसको थोड़ा सा सी ये पूरा एम्प्टी हो गया है, ठीक है, और ये पूरा कंप्लीटली फिल हो गया। इसमें इट मीन्स इन दोनों का स्क्वायर किसके जितना होगा, उसके हाइपोटेन्यूस जितना मिलेगा। दिस इज द प्रैक्टिकल ऑफ पाइथागोरस प्रॉपर्टी, ठीक है। सो राइट डाउन दिस प्रॉपर्टी विथ फिगर इन योर बुक। ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज 6.5. Okay, in the question number 1, you can write the question from the textbook, okay, and write only answer from here. Now question number 1 is, in the PQR is a triangle right angled at P पे वो right angle triangle है, ठीक है, P Q and R एट पी वो 90 डिग्री पे है, ऐसा बुक में बताया है। इफ पी क्यू इज इक्वल टू 10, पी क्यू इज इक्वल टू 10 एंड पी आर इज इक्वल टू 24, देन फाइंड क्यू आर इन ट्राइंगल पी क्यू आर। Measurement of P is equal to 90 degree. So, as per the Pythagoras, यहाँ पे हाइपोटेन्यूस मुझे क्या मिलेगा, क्यू आर। ओके ओके, Pythagoras property, a square of hypotenuse QR square is equal to sum of the square of legs PR square plus PQ square. QR square is equal to PR 24 square plus PQ is equal to 10 square. 576 plus 10 square 100. 24 square is equal to 576. Plus 100, it becomes 676. But
676 is the square of 26. So we can write QR square is equal to 26 square. So we get the square root of both of side. So यहाँ से दोनों जगह से स्क्वायर कट हो जाएंगे. So QR is equal to 26 centimeter. Now the question number 2. ABC is triangle and right angle at C. Question number 2. So in the triangle ABC, and measurement of C is equal to 90 degree. Measurement of C is equal to 90 degree. So Pythagoras property, as per Pythagoras property, as per the Pythagoras property, AB square hypotenuse square is equal to sum of the square of two legs, BC square plus AC square. Now in the question, AB is given, so that 25 square, AB is equal to 25, so we are substitute the value of AB 25 centimeter. Then second value is AC is 7 centimeter. Then find BC. So we want to find the BC square. AC is given 7 square. 25 is equal to 2, 625 is equal to BC square plus 49. 49 इस साइड आएगा तो क्या होगा माइनस 625 minus 49 is equal to BC square. Now 50 minus 9 is become a 6. 1 11 minus 4 is become a 7. 576 BC square. 576 is the 24 square is equal to BC square. So that BC is equal to 24 centimeter. Okay. So now question number 3. These two questions is the properly dependent on the Pythagoras property. Okay. Now third question. The third question is a 15-meter long ladder reach a window at 12 meter high. अब एक यहाँ पे कोई विंडो है जिसकी हाइट 12 मीटर है from the base, and one ladder will be put at the wall like that. And the length of the ladder is 15 meter. From the ground on the placing it against a wall at a distance A. ये A डिस्टेंस पे मुझे वॉल से A डिस्टेंस पे मुझे लेडर रखी हुई है. Then find the A. Then find A. So as per the shown in the figure, the wall and roof are perpendicular to each other. The ground and wall is perpendicular to each other, or it make a 90 degree at joining at the place. So wall make a 90 degree at meeting point. So use
Pythagoras property. Use the Pythagoras property. So hypotenuse is the leader. The 15 square is the sum of the two legs, 12 square plus a square. Okay, then 15 square is equal to 225 is equal to 144 plus a square. So that 225 minus 144 is equal to a square. We can also be write like a square is equal to 5 minus 4, it become a 1, 2 minus 4 is not possible, so 12, it become a 8, and 1 minus 1, 0. A square is equal to 81, so a square is equal to 9 square. So we can say that a is equal to 9 meter. The leader is placed from the wall 9 meter far. Okay, write down the question number 1, 2 and question number 3 with the figure in your book. Okay, write down. Question number 4 is which of the following can be the side of a right angle? Number 1, 2.5 centimeter, 6.5 centimeter and 6 centimeter is the side of the right angle triangle. Let me check it. The second one is 2 centimeter, 2 centimeter and 5 centimeter. The third one is 1.5 centimeter, 2 centimeter, 2.5 centimeter. अगर ये तीनों साइड राइट एंगल ट्राइंगल की साइड होगी तो इट मस्ट बी सेटिस्फाई द पाइथागोरस प्रॉपर्टी. सो हियर 2.5 square is equal to 25 square is equal to 625, but it is a decimal point, so we can put the 6.25 centimeter square. Now 6.5, so we want to find the 6.5 multiply with the 6.5. 0, 6 5 is 30, carry up 3, 6 6 is 36 plus 3 39, 5 5 is 25, carry up 2, 5 6 is 30, 30 plus 2 32, 5 2 12 1 4 2 2 5. So here point after the point 1 digit, here after the point 1 digit, so we can put the point after 2 digits. So 6.5 square is equal to 42.25 centimeter square, and third one is 6 square is equal to 36 centimeter square. So we can see here 36 plus 6.25 is equal to 36 plus 6 42, 42 plus 0.25 it become 42.25. Okay, so that we can say here the sum of two sides square is equal to square of third side. So here 42.25, I think it's 6.5 is hypotenuse of given triangle. So given sides are follow Pythagoras property.
Pythagoras property. So the sides are make a right angle triangle. So given sides are make right angled triangle. ठीक है, इस तरह से आपको डिस्क्रिप्शन लिखना होगा. सेकंड वन इज 2 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर. 2 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर. 5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर. यहाँ पे किसी भी कंडीशन में 4 + 4 8 हो गए, 25 + 4 इज इक्वल टू 29 हो गए. सो हियर given sides are not follow Pythagoras property, so it's not make right angled triangle. Okay. Now third one, check it again. 1.5 centimeter square is equal to 1.5 square is become a 2.25 centimeter square. Now 2 centimeter square is equal to 4 centimeter square. Now next one, 2.5 centimeter square is equal to 6.25 centimeter square. So easily you can observe it. 2.25 plus 4 is equal to 6.25. So here 2.5 centimeter side is hypotenuse of triangle and follow Pythagoras property. Pythagoras property. So the side are it makes right angled triangle. Okay, write down in your book all question. Now the question number 5, interesting question. A tree is broken at the height of 5 meters from the ground and its top touch the ground at the distance of the 12 meters from the base of the tree. Then find the original height of the tree. अगर हम इस तरह से एज्यूम करें, let me assume that one tree like that. Okay, एक ट्री था जो 5 मीटर हाइट से कट हो गया. इट्स कट फ्रॉम द 5 मीटर हाइट्स. सो द सेकंड वन इज लाइक the tree's top is touched at the distance of the root of the tree of how much to 12 meter far. It's a 12 meter. It's a 5 meter. है ना, एक पूरा ट्री था, उसको हम 5 मीटर ऊपर से कट कर देंगे तो वो किसी एक साइड तो नीचे गिरेगा. तो जो ट्री का जो टॉप था वो ट्री के बॉटम से मतलब उसके रूट से वो 12 मीटर दूर वहाँ पे टच हो रहा था. तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, वी कैन ड्रॉ द डायग्राम लाइक अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन
we can draw a diagram like below. नीचे दिए गए डायग्राम को हम ऊपर की तरह से ड्रॉ कर सकते हैं लाइक दैट. This is the 12 meter. This one is the 5 meter. Then we want to find x. We want to find x. ओके ये हमें यहाँ से यहाँ तक का फाइंड करना है. तभी हम उसको ज्वाइंट करेंगे तो पूरी ओरिजिनल मुझे लेंथ मिलेगी ना. यहाँ पे तो इंक्लाइन है और ये वर्टिकल मेजरमेंट है, तो मुझे पूरे ट्री की अगर मुझे लेंथ चाहिए तो ये 5 मीटर तो है, तो यहाँ से यहाँ तक की मिल जाए तो मुझे पूरा ट्री की ओरिजिनल लेंथ मिल जाएगी. सो अप्लाइंग Pythagoras property, the square of hypotenuse is equal to sum of the square of two legs. Five square 25 plus 12 square 144. It become a 169. X square is equal to 169. So x is equal to 13 meter. So remaining part will be 13 meter. Therefore, original height of the tree is 5 plus 13 is equal to 18 meter. 18 मीटर टोटल हाइट उसकी कितनी होगी? 18 मीटर उसकी ओरिजिनल हाइट होगी. नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज angle Q and R of the triangle PQ are 25 degree and 65 degree. Write which of the following is true. अगर एक ट्राइंगल है, अब ट्राइंगल PQR में अब जो एक एंगल है Q आपको दिया है 25 डिग्री एंड R आपको दिया है 65. Okay, then according to the property of the sum of three interior angle is equal to 25 plus 65 plus P is equal to 180 degree. So here 65 plus 25, 65, 70, 80 and 90. 90 plus P is equal to 180 degree. So P is equal to 180 minus 90. P is equal to 90 degree. So here P is 90 degree. So that QR is hypotenuse. QR is hypotenuse. So we can say that as per Pythagoras property, QR square is equal to PQ square plus PR square. ठीक है. Okay, then question number 7. Find the perimeter of the rectangle whose length is 40 centimeter and diagonal is 41 centimeter. First we draw the rectangle. In the rectangle, the length of the rectangle is 40 centimeter and the diagonal of rectangle, let me take the rectangle ABCD, 41 centimeter. Now, if we want to the perimeter of the rectangle, we want to find the breadth of the rectangle. So here consider triangle ABC. अगर इस ट्राइंगल को कंसिडर करें तो इन द राइट एंगल ट्राइंगल एवरी एंगल विल बी 90 डिग्री एज द प्रॉपर्टी ऑफ द राइट एंगल. ओके,
राइट एंगल ट्रायंगल में सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं। तो यहाँ पे जो ट्रायंगल मुझे मिला, ट्रायंगल ABC, हियर एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो दैट AC square is equal to AB square plus BC square. Now AC is equal to 41 square is equal to 40 square plus BC, sorry, AB तो we want to find, BC is equal to 40 square. So 41 square is equal to 40 plus 1 as it is and 8, 1681 is equal to AB square is equal plus 40 square 16. अब यहाँ पे आएगा तो माइनस होगा, 1681 माइनस 1600 is equal to AB square. Now it become 81 is equal to AB square, so that 81 is equal to 9 square is equal to AB square. Cut both sides square, so that AB is equal to 9 centimeter. So now you get the perimeter of two times L plus B, 2 times 9 plus 40, 2 times 49 is equal to 19.8 centimeter is the perimeter of rectangle. So write down the question number 5, 6 and 7. Okay. Now question number 8 is find the diagonal of the rhombus, measure 16 centimeter and 30 centimeter. Then find its perimeter. तो रोम्बस की प्रॉपर्टी आपको पहले मालूम होनी चाहिए. The rhombus diagonal is bisector, perpendicular bisector. Okay. So first one is we will draw the rhombus. Rhombus A, B, C, D. The length of the diagonal 16 it means 8 centimeter and 13 यहाँ पे हम 8 सेंटीमीटर यहाँ पे लिखेंगे एंड 30 के लिए 15 सेंटीमीटर बिकॉज ऑफ द डायगोनल ऑफ रोम्बस. आपको ये लिखना तो लिख सकते हो. द डायगोनल ऑफ रोम्बस is intersecting perpendicular and bisect to each other. दोनों को इक्वल डिस्टेंस में कट करता है और परपेंडिकुलरली उसको इंटरसेक्ट करता है. सो अकॉर्डिंग टू द ट्राइंगल consider triangle AOB. Measurement of O is equal to 90 degree. So AB is hypotenuse. So AB square is equal to AO square plus OB square. So 8 square plus 15 square, 64 plus 225 square, 225, 9, 4 plus 5, 9, 8, 289. So it become a
sorry 4 plus 5 9, 8 square 64 and 15 square 125, 5 plus 9. Let me check it again. Okay, question number 5th, I think question number 5th is seventh, not a 7th, and it become 8. So here 289 is the 7th square. So AB is equal to 70 centimeter, and perimeter of rhombus four into L, 4 into 70, so it become a 68 सेंटीमीटर। इसके साथ यहाँ पे एक्सरसाइज ख़त्म होती है 6.5 और हमारा चैप्टर भी यहाँ पे ख़त्म होता है। तो पूरा चैप्टर अच्छे से एक बार देखो, समझो, फिर बुक में लिख लेना। थैंक यू।